Okay, so last lecture we had done manufacturing account. So when you make a manufacturing account, what is the basis of making a manufacturing account? I've already highlighted it. The first basis of making a manufacturing account is, what did I tell you? Yeah, direct cost plus indirect cost up to factory, right? Yeah. So it has direct material, that is raw material consumed, direct wages, also known as productive wages, and direct expenses, and then factory expenses. Okay, so these are the four bases on which manufacturing account is prepared. Right? I had explained in detail direct cost क्या होता है, उसके अंदर वो conversion का meaning क्या होता है, right? ये भी हमने discuss किया था last lecture में. Yeah. Now coming on to trading, right? Yeah. So when you close your manufacturing account, the balancing figure is known as cost of production. So this balancing figure, which is cost of production, will be transferred to trading account. Here it is, debit side. Okay, second effect. Fine. Now trading means trading of goods, right? That is your finished goods. Barabar. So you will have opening stock of finished goods. Yes. Till last year 11th and 12th standard आप परचेजेस को भी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते थे, वेजेस को भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते थे. From this year onwards, we are going to be very specific. Only raw material and WIP and the related factory expenses will be categorized under manufacturing account debit side, and finished goods will be categorized under trading account. Then credit side sales, you always sell finished goods. So cash sales and credit sales less sales return will give you net sales. Then trading account credit side indicates outgoing of goods. So see, credit side, goods are outgoing. See, goods lost by fire or theft, goods withdrawn by the manufacturer, goods given away as free samples, and closing stock. Okay, yeah. So this is on the credit side, outgoing of goods, by goods lost by fire or theft, by goods withdrawn, that is drawings, by drawings bhi likh sakte ho aap, and by goods given away as free samples. Okay, so when you close your trading account, your balancing figure is gross profit or gross loss depending on the situation, right? So is it clear about trading account to everyone? Trading account is clear to everyone? Yeah, great. Next, come to P&L. Okay. Now, students, from this year onwards, we are going to be very specific. ठीक है? अब मैं आपको रिवाइज कराती हूँ. आप ध्यान से देखो. हमने क्या किया था? टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज व्हाट? सेलिंग प्राइस. है ना? मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था जो आपने थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में सीखा होगा. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. या तो कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट. सो टोटल कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? जो हमने किया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, बराबर. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके. इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज एडमिन कॉस्ट, and selling and distribution cost. Okay, clear everyone? Is this clear to everyone, this concept? Okay, so this direct material, direct labor, direct expenses and factory overheads, yeah, this makes manufacturing account. Okay, and office and selling and distribution overheads makes P&L account. Okay, simple as that. Fine. Okay, so from this year onwards, we are going to be very specific about P&L account. ठीक है? तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि ये वाले लेजर में ये वाला आइटम आएगा. नो,
लॉजिकली याद रखो, सब अपने आप याद आता है. Okay, start with C. To gross loss brought down, to gross profit brought down. ठीक है? Yeah. Then start with first to admin expenses. Admin expenses मतलब expenses paid by the manufacturer with respect to office use. Okay, like office rent, office salaries, telephone and telegram or telex आजकल, printing and stationery, audit fees, legal fees, sundry expenses, general expenses, miscellaneous expenses, directors fees, insurance, repairs and maintenance of office assets, and depreciation of office assets. Okay, please make a note of all this. So this comprises of my admin expenses, office related rent, office related salaries, telephone and telegram, printing and stationery, audit fees, legal fees, directors fees, sundry expenses, general expenses, miscellaneous expenses, insurance, repairs and maintenance of office assets, and depreciation on office assets. Okay. And next criteria is selling and distribution expense. अब ये क्या होता है? Expenses paid by the businessman or the manufacturer in connection to selling and distribution of finished goods. Okay? Yeah. Till last year आप क्या करते थे? आप bifurcate नहीं करते थे P&L को. हम सीधा expenses लिखते जाते. But this year onwards we will have to bifurcate the P&L as admin and selling and distribution. Okay? So selling and distribution expenses में क्या क्या आता है? Salesman salary or salesman's commission, traveling expenses or conveyance. Traveling is also known as conveyance. Next, carriage outward. C/O is carriage outward. Warehouse rent. Warehouse is a place where finished goods are kept ready for sale. Go down rent, same concept. Showroom rent. Secondary packing. Okay? Secondary packing. प्राइमरी पैकिंग होगा तो इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है, कहाँ ऐड होगा? डायरेक्ट मटेरियल में ऐड होगा. ठीक है, या okay. So if you look at eclairs, okay, so earlier in eclairs, now the eclair packing is blue and golden, right? Yeah, but eclairs few, I'll take Cadbury's only. Yeah, so when you had purchase a dairy milk, okay, तो उसके ऊपर पहले एक सिल्वर या गोल्डन फॉइल होता है, तो दैट इज प्राइमरी पैकिंग. ओके, और उसके बाहर का जो ब्लू पैकिंग है जिसमें ब्रांड का नाम लिखा होता है, कितने ग्राम्स का है वो बार, वो लिखा होता है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दैट बार, वो चॉकलेट बार, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द चॉकलेट बार, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो सेकेंडरी पैकिंग है. समझ में आया? Then royalty on sale, advertisement, depreciation on delivery vans. Delivery vans are, I mean, they are motor vehicles which is used for the purpose of distributing finished goods to the customer. Okay, like Amul and Mother Dairy. If you see morning 4 बजे ये लोग आते हैं और दूध का थैली दे के जाते हैं लोगों को. Okay, दूध वाले के इधर. हाँ, तो वो जो उनका गाड़ी आता है मदर डेयरी का या अमूल का, that is delivery. So the repairs and maintenance of delivery van, depreciation on delivery van, okay, that is all going to come under selling and distribution. Okay. Now next come to the new variety, that is financial expense. Now this is something new for you all. ये होता क्या है? Your P&L account is divided as, ध्यान से सुनो. हाँ, जब मैंने बोला C plus P is equal to S, I also said C मतलब direct cost and indirect cost,
And I also said direct cost is further divided as direct material, direct labor, direct expenses. Then I further said indirect cost is further divided as factory, admin and selling and distribution. ठीक है, राइट? ये सब मिला के हम इसको टोटल कॉस्ट बोलते हैं. ठीक है. अब आप बोलोगे अरे मैम ने तो एक नया कैटेगरी भी लिखा, फाइनेंशियल एक्सपेंस. तो फिर मैम ने इसको टोटल कॉस्ट में क्यों नहीं ऐड किया? बिकॉज ये जो फाइनेंशियल एक्सपेंस है, जो कि एक खर्चा है, इट इज एन एक्सपेंस बट इट इज नॉट अ कॉस्ट. ओके, इट इज नॉट अ कॉस्ट. So when you will go in higher standards, you will study about cost accounting standards. Okay, so as per cost accounting standards, financial expenses are not a part of total cost. इसके लिए जब मैंने आपको बताया ये वाला कॉन्सेप्ट, तो मैंने आपको इसमें फाइनेंशियल एक्सपेंस नहीं बताया, बिकॉज जब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तब फाइनेंशियल एक्सपेंसेस नहीं लेते हैं. ओके, बट पीएनएल में लेते हैं, बट वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट निकालते वक्त हम नहीं लेते. Now what is this financial expense? अब ये financial expense होता क्या है? Now these are the expenses which is paid by the manufacturer or businessman for obtaining funds. Okay, for obtaining funds. Now same definition हमने पढ़ा था किधर, you know, I'll tell you. ये जो definition मैंने बोला, what are financial expenses? Expenses paid by the businessman or the manufacturer for obtaining funds. Okay, that is in financing activity. Okay, financing activity. So this we had studied, you know, where students in capital receipts and revenue receipts. हमने ये concept वहाँ पढ़ा था. Okay, that is financial expense. Okay, now I'll tell you what is this financing activity. Okay, अभी जैसे मुझे मेरे बिजनेस के लिए कैपिटल रेस करना है, तो कैपिटल रेस करने का कितना तरीका है? फर्स्ट आई कैन इशू शेयर कैपिटल. Yes. Okay. So through this, I can raise money for the business. Yes. I can take a bank loan. Yes. And I can raise share capital. Obviously, yes. Okay. I can introduce new capital. And I can raise my money in the business. Yes. तो ये जो शेयर कैपिटल है, ओके, इसके बदले में शेयर होल्डर्स को हम क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं. ओके, ये जो बैंक लोन है, इसके बदले में हम बैंक को क्या देते हैं? बैंक इंटरेस्ट देते हैं. और ये जो न्यू कैपिटल है, इसके बदले हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके, तो ये जो है ना, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल एक्सपेंस. ओके, एक्सपेंसेस, दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच इज पेड बाय द businessmen for obtaining funds. What funds? For getting share capital, for getting bank loan, for getting new capital. हाँ, इसमें एक और फंड आएगा, डिबेंचर्स. जब हम डिबेंचर्स लेते हैं तो उसके बदले में हम डिबेंचर इंटरेस्ट भरते हैं. Okay, so this is also a part of financial expenses. Am I clear about financial expenses? Acknowledge it in the chat box. Is this clear to everyone? Okay, very important aspect, financial expenses. So these are also expenses which is debited to P&L account. Okay, so make a note of it. देखो, P&L का debit side, third item is financial expense, and write down the name of the expenses. You have bank interest, you have reserve for discount on debtors, discount allowed, bad debts. Okay, bad debts. If bad debts, you know, if you assume कि obviously assume क्या करना है, bad debts आपको कब होता है? जब आप credit sales करते हो. Cash sales में bad debts का concept आता ही नहीं है, correct ना? तो अगर bad debts कोई selling and distribution में भी डालता है, okay, तो wrong नहीं मिलेगा. But अगर आप मुझसे accounting standards के हिसाब से पूछो, okay, जब हम cost accounting standards करते हैं, तभी बैड डेट्स हम कॉस्ट प्राइस में ऐड नहीं करते. इसके लिए कॉस्ट प्राइस में ऐड नहीं करते हैं, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड नहीं कर सकते फिर हम इसको. ओके, या बिकॉज
कॉस्ट प्राइस कहाँ तक है? कॉस्ट प्राइस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक कॉस्ट प्राइस है, डायरेक्ट मटेरियल से लेके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कॉस्ट प्राइस ही है, ठीक है ना। फाइनेंशियल एक्सपेंस उसमें नहीं आता है, इसलिए बैड डेट्स इसके लिए जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो उसमें आप बैड डेट्स नहीं ले सकते, ओके, बिकॉज बैड डेट्स इज अ लॉस, you couldn't recover money from your customer, how can you charge it then in total cost? Okay, loss by fire or theft, loss on sale of fixed assets. Okay, so these are all financial losses. Obviously loss है इसलिए it is P&L debit. Okay, so is this part clear of financial expenses? Next comes appropriations. Appropriations means keeping money aside. ओके, नेट अभी सपोज अगर मेरा नेट प्रॉफिट है 10, लेकिन मैंने इनकम टैक्स नहीं भरा है, तो चलेगा क्या? कैन आई शो माई बिजनेस नेट प्रॉफिट इज 10? नो, आई कैन नॉट, आई हैव टू पे टैक्स। उसे मैंने इनकम टैक्स भरा 2 रुपया, अब मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 8 रुपये, ओके। और इसमें से भी मैं से 4 रुपया साइड में रखूंगी, मेरे को आगे रिजर्व क्रिएट करना है ना, तो 4 रुपया साइड में रखूंगी, तो कितना बचा? 4 रुपया बच गया, तो दैट इज माई नेट प्रॉफिट, ओके। सो बिजनेस में नेट प्रॉफिट ऐसे डायरेक्टली जनरेट नहीं कर सकते ना, आपको पहले इनकम टैक्स भरना पड़ेगा और उसके बाद थोड़ा रिजर्व साइड में रखना पड़ेगा, तो जो बच गया दैट इज योर नेट प्रॉफिट. Am I clear? Is this clear to everyone? P&L account is clear. From this year onwards, P&L account is in this format, specific format. Okay? Yeah. Financial expenses के बाद आपको reserves side appropriations को रखना है. कैसे? By paying income tax. वो तो मैंडेटरी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961. और फिर थोड़ा रिजर्व साइड में रखने का, राइट ना? हाँ. मम्मी कैसे, जब पापा मम्मी को घर चलाने के लिए पैसा देते तो थोड़ा पैसा साइड में रखती है ना, कि कभी कि अभी जैसे पापा अगर 20,000 देते होंगे मम्मी को घर चलाने के लिए, तो मम्मी पहले से 1,000 रुपया साइड में रखती होगी और सोचती होगी कि 19,000 में घर चला लूँ. नहीं चलता है तो वो 1,000 रुपया जो रिजर्व है फिर उसमें से यूज करेगी. बट अगर चल गया तो अच्छा है ना, मम्मी का तो सेविंग्स हो गया 1,000 रुपये का, राइट? लाइक दिस. तो ऐसे ही बिजनेस में भी फंडा होता है. ओके, देन वॉट एवर यू गेट is net profit or net loss. Okay, so this is the detail about P&L. And write down this note, very important. जब हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किया था तो वहां मैंने आपको बताया था रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑन फैक्ट्री एसेट्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑन डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स. तो अब ये फैक्ट्री एसेट्स क्या होता है? फैक्ट्री एसेट्स में क्या क्या आता है? फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री प्रेमाइसेस, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, लूज टूल्स. ओके, फिर ऑफिस एसेट्स में क्या क्या आता है? ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस प्रेमाइसेस, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस फर्नीचर, एसी, टेबल, फैन, ये सब ऑफिस एसेट्स में आता है. तो अगर आपको एग्जाम में दिखे ये सब एसेट्स और इस पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस या इस पे डेप्रिसिएशन दिखे, सीधा पीएनएल में डालने का. ओके, अंडर द हेडिंग एडमिन एक्सपेंस. और अगर आपको ये सब दिखे, फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री प्रेमाइसेस, फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, यूज्ड टूल्स, इस पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस या डेप्रिसिएशन, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड में डालने का. ओके, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एसेट्स क्या है? वेयरहाउस, गोडाउन, शोरूम, डिलीवरी एक्सपेंसेस. Okay, so rent of the warehouse, rent of the godown, okay, rent of the showroom, all these things will come in the selling and distribution. Delivery van, depreciation on delivery van, repairs and maintenance of delivery van, expenses on delivery van, all this is a part of selling and distribution expense. Am I clear to everyone about this? समझ में आ रहा है? Okay, fine. Very good. ठीक है? And now, okay, so please make a note of all these things, and then very shortly I will start with your adjustments. कुछ
एडजस्टमेंट्स हम ऐसे रफली पहले डिस्कस करेंगे सो दैट नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स आई कैन स्टार्ट विद सम्स. Done with this part, I guess. Now let us start with adjustments. Okay. And you guys are gonna answer now to me, right? We are going to discuss some adjustments, some regular adjustments. Okay. So let me start first with the most famous closing stock. Okay. Yeah, closing stock. Now, closing stock. Now, from this year onwards, you have to be very specific. Whether it is closing stock of raw material, WIP, or finished goods. Okay. So, just tell me the first effect and the second effect. Adjustments will have 2, 3, or maximum 4 effects. Correct? Right? So, closing stock of raw material. Now, from this year onwards, raw material will go where? It will go to manufacturing account. Okay? So, you can write manufacturing account debit side. I'm writing like this, manufacturing debit. Okay? Or you can subtract from the formula of raw material consumed. WIP, yes, manufacturing debit. Finished goods, trading debit. Second effect, all the second effects will go to balance sheet asset side. Right? Clear now? Second, outstanding expenses. Okay? Outstanding expenses. Now, this also depends whether it is an outstanding expense of manufacturing or it is an outstanding expense of office or selling and distribution. Okay, so इसका two effects क्या होगा? First, outstanding means add. So it will be added to manufacturing expense in manufacturing account debit side. And this one will be added to admin expense. This one will be added to selling and distribution expense. P&L account debit side. Okay. और second effect तीनों का किधर आएगा? Balance sheet liability. Next, prepaid. Okay, so prepaid expense, same concept. If it is a prepaid expense of manufacturing or office or selling and distribution, so accordingly you will take it. So prepaid means less from manufacturing expense, less from admin expense, and less from selling and distribution expense.
expense. This will be manufacturing debit, this will be P&L debit, this will be P&L debit. सबका second effect will be what? Balance sheet assets. I hope this is clear to everyone. Are you understanding? Okay. Yeah. Next, prepaid income. Prepaid income will be prepaid, है ना? तो less from the concerned income, less from the income, that is P&L account credit, and second effect will be balance sheet liability. Next, okay. Outstanding income. Outstanding will be added to the income, concerned income, P&L account credit, balance sheet asset. Next, bad debts. Bad debts, we know where to take it. Yeah. Under financial expense, that is P&L debit, and second effect, less from debtors. Next, RDD, reserve for doubtful debts. Same, financial expense, P&L debit side, second effect, less from debtors. I hope you remember this formula you all have been doing. Yeah, I'm writing it here. Two bad debts. फिर वो क्या लिखते हैं? Add new RDD or new bad debts, है ना? Yeah, new bad debts. Then less old RDD or old bad debts. You can write this new bad debts or you can write new reserve. New RDD वो भी चलता है या old RDD, एक ही बात है. Okay, like this. I hope you all remember this. Okay, next, RFDD, right? Same way, financial expense, P&L debit, second effect, data say less. Okay, data say less. Here also you can use that concept. Yeah, just like this, to discount करके, then add new reserve, less old reserve. So you can use this technique also. Next, RFDC, reserve for discount on creditors. Same, ये कहाँ जाएगा? Yeah, P&L credit side, yes, and less from creditors. Okay, इसका भी same concept है. You can write like this, buy discount because it is on the credit side. Then add new reserve, less old reserve. Okay, same concept.
Next, interest on investments. Okay, so obviously P&L credit, and second effect, add to interest. So investments. And yes, don't forget, ये जो मैं डेटर्स बोल रही हूँ ये क्या है? बैलेंस शीट एसेट साइड. हाँ, बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी, और इन्वेस्टमेंट्स कहाँ आता है? बैलेंस शीट एसेट साइड. ओके, डोंट फॉरगेट ऑल दीज माइन्यूट डिटेल्स. नेक्स्ट, depreciation. Okay, depreciation I will bifurcate. If it is on factory assets, if it is on office assets, and if it is on selling and distribution asset. Okay, office asset में है, factory asset में है तो manufacturing account debit, office asset में है तो P&L debit, selling and distribution asset में है तो P&L debit, and second effect, less from the concerned asset. Okay, then goods lost by fire. Okay. Yeah, somebody just take screenshot of the attendance, students, and send it to me on personal window. Yeah, someone please just take it and send it to me just after the lecture. Okay, just acknowledge it in the chat box, whoever is taking it. Yeah, thanks Bhumi. Yeah dear, thank you so much. Okay, so goods lost by fire, एक होता है uninsured goods और एक होता है insured goods. पहले मैं लेती हूँ uninsured. So अगर आपका uninsured goods lost by fire है तो उसका कितना इफेक्ट होगा? 2 इफेक्ट, trading account credit side and P&L account debit side. Okay, yeah. Okay, trading account credit side with the cost price at cost, and P&L account debit side with the loss amount. Okay, yeah. And if it is goods lost by fire, goods lost by fire, कौन सा वाला? Insured वाला. It will have 3 effects. Yeah, first effect, trading account credit side with the cost price. Second effect, P&L account debit side with the loss amount. And third effect will be balance sheet asset side with the claim. Okay, I'm writing here third effect. Okay, and then goods given as free samples. Okay, trading account credit side.
and P&L account debit side. P&L account debit side, it will be seen as advertisement. Okay. Then drawings. Same. Trading account credit side with the cost price. जो भी आप cost trading side credit side लिखते हो ना, goods जो जाता है वो cost price में जाता है और दूसरा less from capital. Balance sheet liability. Okay. So few more adjustments are there which I'll discuss in the next lecture, and we'll start with sums. Okay, am I clear? Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Okay, fine. Thank you, dear.